channel Amrita Prakash Official. Welcome back to another episode of Baking with Moo and Cooking with Moo. जैसे कि आप लोग जानते हैं इन एपिसोड्स में हम साथ में कुछ एक्साइटिंग और कुछ नया बनाते हैं. I'll be very honest with you, आज एक Baking with Moo का एपिसोड ऑलरेडी प्लान था, but my oven has conked off on me, so I need about a week to either repair or replace it. लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ और कुछ बनाया जाए. Why not make something different with you guys instead? So a lot of you actually responded very nicely and positively and showed so much love and support to my creamy hummus recipe. अगर आप में से किसी ने भी creamy hummus की recipe miss कर दी है, please go and check it out. I'm going to link it up right here. लेकिन so many of you made the creamy hummus and so many of you sent me pictures of it and it completely made my day. So big shout out and thank you to all of you who tried it. So आज की जो रेसिपी है is a lot like creamy hummus in the sense that it can also be used in a variety of ways. इसे खाने के भी बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि आज हम बना रहे हैं a very tasty, nutritious, diet friendly and delicious Italian pesto sauce. So a traditional Italian pesto sauce is actually used for pastas, लेकिन जो आज हम बनाएंगे इसे हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं. For example, इसे आप एक dip की तरह भी यूज कर सकते हैं. You can use it to eat with breadsticks and crackers and breads, etc. मैं इसे एक spread की तरह भी यूज करती हूँ. I use it for all of my breakfast sandwiches and I use it as a sauce on my pizzas. So instead of a traditional red tomato sauce, I make my pizzas with a nice, nutritious and delicious pesto sauce and trust me, it just elevates the pizza to another level. It is absolutely delicious. इसे salad dressing की तरह भी मैं use करती हूँ. The best part about this is that it lasts in your refrigerator for up to a month. So it's a great thing to just have in stock. And if you are a non-vegetarian, you can also marinate your chicken or your meats in it. If you're a vegetarian, then mushrooms, paneer, tofu, it can be used for a marinade as well. So a variety of uses. I am very excited to show you how I make my Italian pesto sauce. So let's get started, guys. Okay guys, so let's get started with this very versatile and very tasty and diet friendly pesto sauce. So सबसे पहले तो मैंने लिया है एक फूड प्रोसेसर. दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू डू इट. लेकिन अगर आपके घर में फूड प्रोसेसर नहीं है, आप एक रेगुलर ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं. बट इफ यू हैव अ फूड प्रोसेसर, आई वुड रेकमेंड कि आप इसे यूज करें. So what I'm going to start with is half a cup of chopped walnuts. वैसे एक traditional Italian pesto में pine nuts use होते हैं या फिर pecan nuts use होते हैं. But in India, pine nuts and pecan nuts are not very easily available and they're very expensive. So great alternative is to use walnuts. Also, walnuts are great for you. They're very nutritious. They're full of omega-3. And बचपन में मम्मी ने आपको जरूर बोला होगा कि बेटा अखरोट खाओ, दिमाग तेज होगा. So this is a great way to actually incorporate walnuts into your diet. I'm also going to do a very important hair and skin health video जिसमें walnuts play a very important part. So remember guys, walnuts are very good for your hair and your skin. So I'm just going to put the half cup of chopped walnuts into my food processor. Okay, and now we're going to blend this until it becomes a fine grainy texture. Now a nice grainy texture. So what I'm going to do next is add 2 teaspoons of chopped or minced garlic directly into these walnuts. So that's one. Okay, and now grind again. Alright, so अब मैंने इसे about 30 seconds blend किया है, the walnuts and the garlic together, and it's become a nice paste-like consistency. So what I'm going to do next is add a little bit of salt. अभी मैं शुरू में बहुत ज़्यादा salt नहीं डालूंगी. I will, increase the salt स्वाद अनुसार as we go ahead. So right now I'm just taking about half a teaspoon of salt and adding it. And I'm going to give it another grind for about 30 seconds. Okay, अब हमारा walnuts, garlic और salt अच्छे से mix हो गया है. So now we can move to the main ingredient and the star of this recipe, which is the Italian basil. This is the key ingredient of this recipe. Obviously, this is what gives it the delicious flavor and the bright green color. So मैं यहाँ पे Italian basil leaves use कर रही हूँ.
एक चीज ध्यान रखिएगा, these have to be completely dry because the most important part of this recipe is that it has to have absolutely 0% water content. इसमें आप बिल्कुल भी पानी नहीं मिला सकते हैं, या वरना वो जो प्रिजर्वेटिव वैल्यू होती है इसकी, जैसे मैंने आपको बताया था in the beginning that this is going to last in your fridge for a long time, वो completely चली जाती है and this will then become perishable very very quickly. So no water at all. यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 cup of Italian basil leaves. And I'm also going to use 1 cup of baby spinach leaves. आप चाहें तो ये रेसिपी completely इटालियन बेसिल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, so I like to use a little bit of spinach just to cut the flavor down a little bit. Of course, baby spinach नहीं हो तो आप यूजुअल बड़ी वाली पालक की लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो कभी कभी थोड़ी सी कड़वी होती हैं. So the best thing to do is to mix it with baby spinach, which is these small little palakki leaves. Okay, so I'm going to begin with putting in the Italian basil into the food processor, जिसमें obviously हमारे walnuts, garlic और salt है अभी तक. And एक बार मैं पहले basil को blend करके बाद में पालक add करूँगी, but let's just make this into a paste first. Don't ever forget to scrape the sides of your blender. Very, very, very important to do that. Okay, so I have scraped the sides and now I'm going to add in my baby spinach. Like I told you guys, आप इस रेसिपी को सिर्फ बेसिल के साथ भी बना सकते हैं. I don't like the flavor of only basil. मुझे वो बहुत strong लगता है, which is why I like to add some baby spinach in it. And of course, adding baby spinach makes it more nutritious also. Okay, ready to blend? Just going to scrape the sides once and blend. Okay, अब हमारा स्पिनच और बेसिल जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है. It's almost a paste-like consistency. So now for one of the main ingredients of this recipe, the olive oil. Olive oil इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स योर मेन प्रिजर्विंग एजेंट, इट्स द मेन प्रिजर्वेटिव. हम इसमें कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं डाल रहे हैं. सो ऑलिव ऑयल इज द वन दैट्स गोइंग टू प्रिजर्व दिस पेस्टो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन योर फ्रिज. आप जितना भी इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे आपका पेस्टो उतना ज़्यादा लंबा चलेगा आपके फ्रिज में. सो द करेक्ट वे टू डू इट, एंड दिस इज द रीजन दैट आई इंसिस्टेड ऑन यूजिंग अ फूड प्रोसेसर, इज बिकॉज हमें इस ऑलिव ऑयल को इसमें ड्रिप करना है while it's blending. That's the correct way of doing this. लेकिन अगर आप एक रेगुलर मिक्सर या ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो you can just add the olive oil now. So what I'm going to do now is I'm going to start the mixer and start drizzling the olive oil in. This is about 3 tablespoons of olive oil that I have, and इसमें से मैं probably about 2.5 tablespoons इसमें डालने वाली हूँ. Alright, so I'm going to begin to blend. About 2 tablespoons of oil into this, and now it's a great spreadable consistency. तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और नमक and थोड़ा सा पेपर डालूंगी स्वाद अनुसार. So just adding half a teaspoon more of salt and half a teaspoon of ground pepper, यानी कि काली मिर्च पाउडर. You can completely avoid the ground pepper. I just like a burst of काली मिर्च. And blend. गाइस, जितना भी आप इसमें ऑलिव ऑयल और नमक डालेंगे आपका पेस्टो सॉस उतना ही लंबा चलेगा. दैट मीन्स दैट इट विल बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर. बट आई डोंट वांट टू यूज दिस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. मैं इसे अभी 5-6 दिन में खाने वाली हूँ. सो आई एम नॉट यूजिंग टू मच ऑयल और टू मच सॉल्ट. बट इफ योर इंटेंशन इज टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो प्लीज इसमें और नमक और ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं.
Okay guys, and just like that our pesto is completely ready. एक इटालियन पेस्टो में ट्रेडिशनली इस पॉइंट पे पार्मेजान चीज डाला जाता है. पार्मेजान चीज इज एन इटालियन चीज जो इंडिया में बहुत कम मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. इफ यू हैव पार्मेजान चीज एट होम, आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें 1/3 कप पार्मेजान चीज इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं. मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई पेस्टो टू बी डाइट फ्रेंडली एंड आई वॉन्ट इट टू बी फ्री ऑफ डेयरी. सो दिस इज अ वीगन पेस्टो दैट आई हैव मेड. सो इसमें मैं कोई भी डेयरी एलिमेंट नहीं डाल रही हूँ एंड इट्स जस्ट as good without the parmesan cheese. But if you want to make a very traditional pesto, तो आप इसमें 1/3 कप parmesan cheese इस पॉइंट पे ऐड करके ब्लेंड कर सकते हैं. But for me, my pesto is absolutely ready and I'm ready to serve it. So let's go. And check it out guys, it looks gorgeous. What a gorgeous forest green this is. I am so excited about eating this because मुझे pesto बहुत ज़्यादा पसंद है. I am going to make some delicious pesto pizzas out of this. इसलिए इसे मैंने एक spreadable consistency पे रखा है. अगर इसको मुझे किसी और तरीके से यूज़ करना हो, for example, if I want to use this as a salad dressing, I'm just going to add some more olive oil and make it more dressing like in terms of consistency. अगर मुझे इसे पास्ता में यूज़ करना है, what I'll do is I'll add a little bit of cream and make it a sauce. There's so many ways to use this, but I'm going to make some delicious pizzas out of this. Of course, इसे marinade की तरह भी use कर सकते हैं. So I've just kept it at this consistency right now, but you can adjust your consistency however you like. So guys, if you enjoyed this video, you know what you have to do. Please like, share and subscribe, and of course hit the bell icon guys so आपको पता चल जाए when my next video comes out. Stay tuned. I am now going to go and make some delicious pesto pizzas, but please keep watching Avtar Prakash Official. I'll be back very soon with a new video. Take care of yourselves, stay safe, stay kind. Lots and lots of love. Bye.